तो नमस्ते। जैसा कि हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है, मतलब सारे एग्ज़ाम, तो कंप्यूटर साइंस का जो है 9 सितंबर को है शायद। अभी हमारे पास कितने दिन बचे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4.5 महीने या 4 महीने कह लें। 10-15 दिन तो टेस्ट के लिए होता है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है कंप्यूटर साइंस का। सो कंप्यूटर साइंस पेपर 1 यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पेपर 1 है ना। तो पहला पार्ट क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसमें क्या है? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम and their interconnection, buses, bus architecture, types of buses and bus। हाँ, उसके बाद क्या है? बस, types of buses and bus arbitration, register, bus and memory transfer, processor organization, general purpose register organization, stack organization and addressing modes, arithmetic and logic unit, control unit, memory, input output devices, interfaces and ports है ना, interrupts and exceptions, modes of data transfer, synchronous and asynchronous communication, standard communication interfaces। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हमारा क्या आ जाएगा? Elementary data organization, building data types in C, C++, Java, algorithm, efficiency of an algorithm, time, space, complexity, asymptotic notations, big O, big theta and big omega, time, space trade-off, abstract data types, CDT, arrays and application of arrays, parse matrix and their representations, linked list, stacks, queues, searching and sorting, graphics, tree, binary tree, and its applications, hashing, B plus tree. Discrete structures and theory of logic, set theory, relations, functions, natural numbers, proof methods, proof by counter example, proof by contradiction, algebraic structures, lattice, propositional logic, trees, graphs, combinatories, matrix। DBMS क्या होगा? डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टांसेस, डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस, डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज, DML, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप एंड enhanced ER, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, टपल एंड डोमेन कैलकुलस। उसके बाद आता है SQL, database design and normalization, NoSQL, transaction processing, concurrency control techniques, web interfaces to DBMS, design analysis of algorithms and its analysis, complexity of algorithms, growth of functions, performance measurements, sorting and order statistics, red black trees, B trees, binomial heaps, Fibonacci heaps, tries, skip lists, divide and conquer with examples such as shortcake, sorting, matrix, multiplication, convex, hull and searching, greedy methods, optimal reliability। उसके बाद है लोकेशन, नैपसैक, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, प्रिम्स, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम्स, single source shortest path, Dijkstra and Bellman Ford algorithms, dynamic programming such as knapsack, all pair shortest paths, Warsels and Floyd's algorithm, resource allocation programs। ओके, ये सारा पेपर 1 का सिलेबस है। 3-4 टॉपिक और हैं पेपर 1 में। बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक सच एज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग एंड क्वीन प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल्स and sum of subsets, algebraic computation, fast Fourier transform, string matching, theory of NP, completeness approximation algorithms and randomized algorithms, computer networks, goals and applications of networks, network structure and architecture, the OSI reference model, services, network topology, design, physical layer transition, transmission media,
Switching methods, ISDN, terminal handling, medium access, sub-layer, channel allocations, LAN protocols, Aloha protocols. Overview of IEEE standards, FDDI, data link layer, elementary data link protocols, sliding window protocols, error handling, network layer, point-to-point networks, routing, congestion control, internetworking, TCP/IP, IP packet, IP address, IP version 6, XUs, remote procedure call, presentation layer design issues, data compression techniques, cryptography, TCP, window management, application layer, file transfer, access and management, electronic mail, virtual terminals, other application, internet and public networks, peer-to-peer network, principles of programming languages, role of programming languages, programming paradigms. इसमें सिंटैटिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इश्यूज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, stages in translation, formal translation, models, data types and basic statements, binding types, checking scopes, scope rules, lifetime and garbage collection, primitive data types, strings, arrays, types, associative arrays, records, union type, pointers and references, arithmetic expressions, overloaded operators, type conversion, relational and Boolean expressions, assignment statements, mixed mode assignment, control structure, selection, iterations, branching, guarded statements, subprograms, and implementations, design issues for functions, semantics of call and return, implementing simple subprograms, stack and dynamic local variable, nested subprograms, dynamic scoping, object orientation, concurrency and event handling, object oriented programming using C++ and Java, functional and logical programming languages, software project management, fundamentals of software project management, software project planning, software project estimation, project organization and scheduling project elements, project life cycle and product life cycle, ways to organize personal project schedule, scheduling objectives, building the function project schedule, scheduling terminology and techniques, network diagrams, PERT, CPM, bar charts, milestone charts, Gantt chart, dimensions of project monitoring and control, earned value analysis, earned value indicators, budgeted cost for work schedules, cost variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index, interpretation of earned value indicators, error tracking, software reviews, software quality assurance and testing, project management and project management tools, software configuration management, risk management, cost benefit analysis, SPM tool, case tools, planning and scheduling tools, MS project, cyber security, information system, its types and development, information security and its need, threats to information systems, information assurance, cyber security and security risk analysis, application security, database, email and internet data security consideration, backups, archival storage and disposal of data security technology, firewall and VPNs, archival storage and disposal of data security technology, firewall and VPNs, intrusion detection, access control, security threats, viruses, bombs, Trojan horse bombs, trapdoors, spoops, email viruses, microviruses, malicious software, network and denial of service attack, security threats to e-commerce, electronic payment system, e-cash, credit, debit cards, digital signature, public key cryptography, developing secure information system, information security, governance and risk management, security architecture, design, security issues in hardware, data structure, storage and downloadable devices, physical security of IT assets, access control, CCTV and intrusion detection system, backup security measures, security policies, development of policies, email security policies, policy review process, corporate policies, sample security policies, publishing notification requirements of policies, evolving technology security, mobile cloud, outsourcing, SCM, information security standards, ISO, IT Act, Copyright Act, Patent Law, IPR, Cyber Laws in India, IT Act 2000 provisions, intellectual property law, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सेमीकंडक्टर लॉ एंड पेटेंट लॉ, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। पेपर 2 में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, फंक्शन एंड सर्विसेज, टाइप्स, रिंग, ट्रेंड, कर्नल्स, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल सिस्टम्स, सिस्टम कॉल्स, टाइप्स, सिस्टम प्रोग्राम्स, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कंकरेंट प्रोसेसेस, CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड एल्गोरिथम्स,
memory management, file management, device management and disk scheduling, file management, Unix commands and utilities, Linux system components, process management, scheduling, memory management, networking, software layer, security, various editors, IO devices. Then graphics are types of computer graphics, graphic display, random scan display, raster scan display, frame buffer and video controller, points and lines drawing algorithm, circle generating algorithm and parallel version of these algorithm, basic and composing transformations, reflections and shearing, windowing and clipping, 3D geometric primitive representation, transformation, projections and clipping, curves and surfaces, artificial intelligence, introduction, foundation, history, application, intelligent agents, structure, computer vision, NLP, strategies, informed search strategies, compiler design है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके बाद है वेब टेक्नोलॉजीज, इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी बड़ा है, उसके बाद सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, न्यूरल नेटवर्क्स, फजी लॉजिक एंड जेनेटिक एल्गोरिथम, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग। ओके, तो ये सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 और 30 मार्क्स के जीएस और हिंदी आएंगे एक एक पेपर में, तो वो भी करेंगे। अभी के लिए सिलेबस देख लिया है, प्लान करते हैं, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स कराते हैं एक एक करके। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन बहुत शुभ हो।